Hello friends, this is Love Kumar. Today is the third day of the rain that's happening in Gainesville, Florida. So this is the University of Florida's view. So आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी पानी नहीं खड़ा है. And it's continuous raining, sometimes fast and sometimes heavy and sometimes slow, medium. And it's expected कि 2 दिन और चलेगी rain. You can see the view. So we are going to the student health care. और ट्रांसपोर्टेशन भी कंटिन्यूस चल रही है. There is no break in anything. Light you can see right there. Power continuous है. थोड़ा आपको विज़िट करवाते हैं, व्यू दिखाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का. ये एक डिपार्टमेंट है सॉइल वाटर साइंस एंड these are the bins. So we are walking towards the student care center. So this is all the greenery. So that's the Rise Union. ये पूरा प्लाजा स्टूडेंट्स का है. यहाँ पे स्टूडेंट कैन सिट, play, eat, and they can study all the time if they want, and it's open all the time. And the student government भी यहाँ पे बैठती है राइज यूनियन के अंदर. तो अभी समर टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा कैंपस में रौनक कम है. स्टूडेंट आर ऑफ कैंपस. कुछ छुट्टियों पे गए हुए हैं, कुछ इंटर्नशिप के लिए. समर आउट ऑफ कंट्री जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, दे गेट टाइम टू विजिट देयर होम कंट्री. सो सामने ये कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है. यहाँ पे एक वेरी ओल्ड एंड फेमस मूवी मेकर रखा हुआ है. सो सम टाइम अगर कभी टाइम मिला तो आपको वो भी दिखाएंगे हम. ये अभी हम वॉक कर रहे हैं. इट्स लाइक 10 minutes फ्रॉम द स्टॉप, बस स्टॉप ऑफ द राइज यूनियन. थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे बसेस जाती तो हैं लेकिन
It's like it takes more than if we walk. So you see ये यहाँ से पानी नीचे जाता है, but there is no water down. जहाँ पे खड़ा हो पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन you don't see the water on the street a lot because जो मटेरियल यूज़ किया गया है इन रोड्स के अंदर that absorbs the water. ये सामने स्टेडियम है एंड इसको स्टेडियम रोड कहते हैं वहाँ पे. तो ये स्मॉल वाटर कलेक्शन पॉइंट्स बनी हुई हैं जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं एंड देन दे ट्रीट इट एंड देन दे यूज इट फॉर गार्डनिंग एंड आई डोंट नो द अदर थिंग्स व्हाट दे डू विद दिस वाटर. This is all the stadium area. You see, clouds are very dark. This is the football stadium. This is the one of the famous point where all graduates take the picture when they have the graduation ceremonies. We are still walking. Now we'll push the button to wait to cross the road once that turns white. Yeah, it turns out white, so now we can walk. So we are still walking, though we are very near to the student health center. So that's the recreation center where swimmers and other players they teach and they also get the trainings out there. Sorry, we cut the video in a half, so it was raining a lot. You see the another stadium right there. So this is the student healthcare building. So we are waiting for the bus that is coming right there. If you see, we'll take the bus. So we already visited the health center. Someday I'll show you the student health center.
So you see the register dot. The bus is here. We'll take the bus. So we got off from the truck. Now we are going to another point. So this is the library building. So you saw water is going to the draining area that is specifically for only rain purposes. So this one is library. This is all for today. See you in next episode. Thank you for watching.